So, what are मेरे you पैर eating? What are you eating, Ali? बस हाथ से दबा दो। Cucumber. Only 4 participants are here. Okay, beta, just keep your worksheet pack, pencil and a pen along with you. Worksheet pack, everyone. Assalamualaikum Wafa, how are you? Okay, everyone. So, 6 participants are here. So, I think let's start our topic. Everyone, please keep your cameras open. Class, keep your cameras open. Everyone, no one is allowed to close your camera. Okay, everyone. Shami, Ahmad, Kirat. Everyone, please keep your cameras open. Assalamualaikum, miss. Alaikum salam. How are you, Fahad? Fine. Yes, And how are you? Assalam. so fine. Okay, so let's start our topic. In previous class, we have discussed about that what is electricity. Okay, what is electricity? Electricity is the flow of energy. As I have discussed in previous class, that electricity is the flow of energy. In electricity, we have two negative, two positive charges, positive charge and negative charge. And I have told you before that two opposite charges attract with each other. Okay, two opposite charges attract with each other. So let's start our topic. Just take a brush up of previous lecture. In this lecture, we will study about that how to light bulb before starting our topic. Just look at that what is electricity. We need electricity for different purposes, as we have discussed in our previous class. That we need electricity for different purposes. Okay. Number one is for lighting up a bulb, for charging your phone, to charge your laptop to system, and okay, for many purposes for we use electricity. But before going to electricity, we have discussed about that what is atom. Okay, we have discussed about it. Atoms are the building blocks of ordinary matter. Atoms can building blocks of matter. What is matter? Anything which occupies space and have a volume is called atom. कोई भी चीज जिसकी space जो space carry करती है वो volume रखती है, which is called matter. For example, we have so many things: your table, your chair, so many things around you which are made up of matter. Okay, all the matter are consist of atom. ठीक है. Atoms have three particles. How many particles are there? Three particles. So I am just going to unmute the mic of Shamil and just let me know that how many particles are there of atom. Shamil. Yes, Shamil. Teacher, How many particles of atoms? Yes, Shamil. 10 teacher. Teacher 10. No. We have discussed just Bafa. Yes, Bafa. There are three items of Three particles of atom. Very good, three Bafa. particles of item: Okay. proton, neutron, and electron. Very good, Bafa. Excellent. We have three particles of atom: proton, electron, and neutron. Okay, as I am going to show the picture, just look at the picture over here. Here the structure of atom. We have three particles of atom. How many particles? Just keep it in your mind.
Keep it in your mind, class. We have three particles of atom: proton, neutron, and electron. Okay, how many particles? Three particles. Again, I'm repeating my points. How many particles are there? Three particles: proton, electron, and neutron. And in the center of atom, we have a nucleus. Look at the picture over here, which are balls-like shape. We have blue and red in color. This is called nucleus. जस्ट लाइक अवर ब्रेन कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अवर बॉडी, जैसे कि हमारा ब्रेन हमारे तमाम एक्टिविटीज से कंट्रोल कर रहा है, जस्ट लाइक दैट द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन एटम. ओके, हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर देयर? थ्री पार्टिकल्स: प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. And in the center of an atom we have a nucleus. Okay everyone, now come to the next. We have two charges. How many charges are there? Two charges: positive charges and negative charges. And we all know very well about it that opposite things attract with each other and same things repel each other. कोई भी चीज opposite होगी तो दूसरे को attract करेगी. Means different signs, positive and negative signs. Positive, negative signs always attract with each other. But we are talking about same sign. When you negative, negative and positive, positive, they always repel each other. ये दूसरे को धक्का देंगे. They will never attract with each other. ये दूसरे कभी भी करीब नहीं आएंगे. ठीक है? So we have all discussed about it. हम ये previous class सब discuss कर चुके हैं. Now what is electricity? Keep it in your mind. I will ask a simple question with you, that what is electricity? So what will you answer? Electricity is a form of energy and flow of electrons. What is electricity? Electricity is a form of energy and flow of electrons. Means एटम के गिर्द, जो हमारे पास एटम है उसके गिर्द, उसके रिवॉल्व अराउंड क्या एटम्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. ठीक है? Just look at the picture over here. Look at the picture. Here is a battery, a wire, and a bulb. What will happen? When we will join a wire with battery, so what will happen? Positive and negative signs start to flow and a bulb will glow. Means that the electricity is a flow of electrons. And electrons have a positive charge. Electrons have a positive charge. Sorry. Electrons have a negative charge. इलेक्ट्रॉन्स को कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. ये बात भी याद रखिएगा. ये बात भी आप कीप इट इन योर माइंड क्लास, दैट प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन्स हैव नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज. नोट डाउन एवरीवन. प्रोटॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज and electrons have positive negative charge. Okay, now so what will happen in this picture? When the positive and negative, when the two wires join with the battery, so positive and negative wire, the charges start to flow, and whenever they start to flow, a bulb will glow. Means that the electricity is a flow of electrons. Electrons ने flow करना शुरू कर दिया. ठीक है? As soon as the electrons flow, bulb will glow up. Okay class? Now just wait for a while. Okay everyone, now come to the next slide. How many types of electricity? We have two types of electricity: static electricity and current electricity. How many types of electricity are there? Two types: static electricity and current electricity. Note down my all points, because I am going to conduct a quiz with you class maybe tomorrow. So note down my all points. It will help you to solve your quiz. We have two types: static electricity and current electricity. Now, static electricity, what will happen? In static electricity, all the charges will remain at one place. We have the basic difference between, what is the basic difference between static electricity and current electricity? What will happen in static electricity? आपके पास जितने भी चार्जेस होंगे, कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होंगे, वो एक ही जगह पे स्टक रहेंगे. दे विल नॉट फ्लो. तो क्या नहीं करेंगे? फ्लो नहीं करेंगे. The charges of electricity, static electricity will not flow, and in current electricity, charges will flow. Okay. In static electricity, charges will not flow,
and in current electricity charges will flow. ठीक है, this is the basic difference between static and current electricity. Okay everyone, these all are the previous lecture which I am repeating again for your class. Now here are the picture of static and current electricity. Look, there is a balloon and some pieces of paper. As I told you in previous class that some students do not have balloon, but don't need to perform this activity again. If you want to see this activity, you just take a balloon or some pieces of paper along with you. So what will happen whenever you rub your hand, rub your hairs, you rub your clothes with this balloon, and bring the balloon near to the piece of paper. So all the piece of paper will stick into the balloon. So this is the charges will stay at one place, यानी कि चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे. ठीक है, चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे जब भी तो कुछ नहीं हो रहा, यानी कि वो सिर्फ अट्रैक्शन दे रहे हैं. लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, दे विल नीड अ इलेक्ट्रॉन, विल नीड अ टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. दैट्स व्हाई करंट विल फ्लो. ओके, so these all are the previous lecture. Now I am going to Beta, stop messaging with each other on chat box. Okay, everyone? Stop messaging with each other on chat box. Now, I am going to share a video with you, class. Unmute yourself. Everyone, unmute yourself. Unmute कीजिए खुद को. और not just let me know. Just let me know. टीचर बंद करें. नहीं, unmute करना है आपने. Unmute yourself. Now listen, मुझे जवाब दीजिए. Give me to answer, class. That if you want to ask any question regarding this topic which I have explained right now, so you can ask me, because I am going to share another topic with you. Do you have any question regarding previous topic? No. मैंने सिर्फ आपसे ये कहना है, सर आपने एक एनर्जी वाली थी ना, व्हाट इज एनर्जी, वो फिर से दिखा दे. क्या चीज? Which one? लाइट, व्हाट इज एनर्जी. This one? This one? This one, Shamir? Okay. So what do you want to ask Shamir about it? टीचर आप प्लीज वाली पिक्चर वापस से शो कर दीजिए जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स सबके बारे में बताया Okay. था. This one? This one, Papa? Yes, Papa. This one? टीचर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया था. Okay. This one? Okay, now listen everyone. Take a screenshot, Papa. Take a screenshot. Okay. Now listen everyone. We will perform an activity. Now look at the picture. Everyone now look at the picture. Just listen to it. पहले आप लोग मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप लोगों को वीडियो शो करूंगी. With the help of that video, you can easily perform this activity. Now what will happen? Now listen. How to light a bulb using a cell. अगर आपने एक कोई बल्ब जो है वो ग्लो करना है, तो how can you light a bulb by using a cell? What will happen? Just take a cell. आप लोग क्या करेंगे? एक सेल लेंगे जो कि अपने घरों में भी नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, आप एक सेल लेंगे. ठीक है, which have two ends, positive terminal and negative terminal. Okay everyone? इसका माइक जो है म्यूट नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है. Okay, what will you do? Just take a cell with positive and negative terminal. Okay, easily आपको घर में अवेलेबल होगा. हम लोग जो अपने वॉल क्लॉक में यूज करते हैं या डिफरेंट पर्पसेस के लिए वो सेल यूज करते हैं, you can take that cell. Okay,
they have two terminals, positive terminals and negative terminals. As I told you before that we have two charges, positive charges and negative charges. Okay, so in any cell you have two terminals, positive terminal and negative terminal. Take a cell, टू इलेक्ट्रिक वायर्स, दो वायर लीजिएगा. ओके, टू इलेक्ट्रिक वायर आपको इजीली घर में भी अवेलेबल होंगे, मिल जाएंगे कहीं से भी. ठीक है, टू इलेक्ट्रिक वायर्स लीजिएगा. ओके, एंड अ स्मॉल एलईडी बल्ब. आपने देखोगे स्मॉल एलईडी बल्ब आते हैं, छोटे छोटे बल्ब मिल जाते हैं इजीली, मार्केट में मिल जाएंगे आपको बहुत सस्ता, 10 रुपीज़ के 20 रुपीज़ के मिल जाएंगे आपको इजीली. ठीक है, एक टू बल्ब या वन बल्ब, एक बल्ब इजीली मिल जाएगा, एक बल्ब लीजिएगा बहुत है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. ओके, नाउ व्हाट विल यू डू. आप लोग क्या करेंगे, एक बल्ब लीजिएगा, एक सेल लीजिएगा, टेक टू वायर्स एंड अ बल्ब, एंड व्हाट विल डू, क्या करेंगे आप, बल्ब विद द हेल्प ऑफ बल्ब ज्वाइन वन वायर, आप एक वायर को अपने ज्वाइन करेंगे इस बल्ब से. आपने देखा बल्ब का जो आपके पास जो स्टील वाला पार्ट होता है, यू विल ज्वाइन दिस वायर फ्रॉम वन एंड फ्रॉम सेल एंड वन एंड फ्रॉम द बल्ब. ओके, एंड कनेक्ट दिस वायर फ्रॉम द टू द बल्ब. इस बल्ब से आप वायर को कनेक्ट करेंगे. कनेक्ट वन पार्ट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल एंड कनेक्ट वन वायर फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल. ओके, एंड टेक दिस टू वायर्स टू द last part of the bulb. Okay, whenever you take this part to the bulb, what will happen, bulb will get glow and the electrons will start to flow. अब देखिए electrons करेंगे because electricity क्या है, electricity is the flow of electrons. So as soon as you will join a wire from positive and negative terminal, अब जब positive और negative terminals को आपस में join करोगे, what will happen, the flow of electrons will get to start, electrons का flow शुरू हो जाएगा and bulb will get glow. Okay, ठीक है बेटा. अच्छा लिसन, मेरी बात सुनिए, एक आपको वीडियो दिखा रही हूँ मैं, with the help of that video you can easily be join these words. Okay, तो ये वीडियो केयरफुली देखिए. अगर आप लोगों को वीडियो की वॉइस समझ नहीं आए तो मुझे बताइएगा. ठीक है, मैं आप लोग के माइक अनम्यूट कर रही हूँ. अगर आप लोग को वीडियो की आवाज़ नहीं आए तो मुझे बताइएगा. ठीक है, ओके एवरीवन. Now just look at this activity. अगर आप लोग को वॉइस नहीं आया तो मुझे बताइएगा. ठीक है, आवाज आ रही है? नो नो टीचर, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है. नहीं आ रही टीचर आ रही, अच्छा सुने मेरी जो बात. नहीं आ रही, लिसन, आप लोग सुने मेरी बात. आ रही है. नाउ लिसन, नहीं आ आप रही. लोग देखिए कि वीडियो में हो क्या रहा है. I will share this link on software on a WhatsApp group so you can easily be see this video from that software. Okay, आप लोग सिर्फ देखिए कि इसमें हो क्या है. Don't need to listen the voice what she is saying to you. Okay, just look at the video. Okay everyone, अगर वॉइस नहीं आ रही look at the video. What is happening? She took a cell with two terminals, positive terminals and negative terminals. Okay. Small metal tab on one side and a metal disc on the other side. You have two terminals. जो वॉइस ही नहीं आ रही. Beta, I will post the link of this video. Just look at the pictures what she is doing. Okay. The voice is not coming. Positive for the animal, negative terminal. Listen, beta. What I am saying to you, just look at the picture. That what she is doing in the picture. If you are not able to listen the voice, I will share this video in on software. So from that software, you can easily watch this video. Okay? मिस नहीं आ रही ना, मिस आवाज नहीं आ रही. Picture आ रही है, तस्वीर आ रही है सबको? Yes. Just look at the picture. Just look at the picture. Okay? Okay. Now listen. Just look at the picture. यार से कैप्शन ऑन कर देना, हम लोग सुन लेते हैं. He took a cell, a bulb. Okay? The bulb
closer. She took a cell, a bulb. A small piece of wire in the middle of the stick. Okay. No. Okay. Now what she will do? No. So there are fixed places to make the bulb. Two terminals have to make the bulb open. Now what she will do? Now look at the picture. What she will do? She took a cell, a bulb, and joined one terminal from cell and next wire from the bulb. Okay. Otherwise, cell would be useless and wouldn't make the bulb glow. Now, let's make a path for electric current to flow. Connect an electric wire to the positive end of the cell. We can use rubber bands or tape to fix the wires to the cell. Now, connect the other end of the electric wire with any terminal of the bulb. Say, we connect with the terminal which is on the metal base. We can stick the wires to the second terminal. Okay. From the other end, from that end, they will connect a wire. Now look at the picture. What will happen? From the other end, from the negative terminal, they will connect a wire. Look at the picture. आपने इस तरह से वायर को जोड़ना है बल्ब के साथ. एक वायर आपने सेल के साथ लगाना है, एक वायर आपने बल्ब के साथ लगाना है. ठीक है? Negative end of the cell. Look, What will happen? ये आवाज फिर अटक रही. मैं सबकी आवाज सही से आई नहीं. Okay, now listen everyone. Just wait. क्या आपकी आवाज ही नहीं आ रही? Just wait, beta. Now voice is clear. Now my voice is clear, class. Yes, beta. Just let me know. My voice is clear, class. Yes. Now, Yes, now miss. listen. Now listen. What will you do? You will take a cell, two wires, and a small electric bulb and a small LED bulb. Okay. What will you do? Join one end from a cell and from the end from a bulb. ठीक है. आप दोनों वायर्स को ज्वाइन करोगे आपस में. एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करोगे, नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करोगे. Whenever you will join a wire from a bulb and a cell, so what will happen? Bulb will get glow. बल्ब क्या कर जाएगा? ग्लो कर जाएगा. ठीक है. एज आई शोन यू इन वीडियो, आपको वीडियो में यही दिखाया गया है कि आप जब पॉजिटिव एंड को और नेगेटिव टर्मिनल्स को ज्वाइन करोगे बल्ब के साथ, तो व्हाट विल हैपन? बल्ब विल गेट ग्लो. अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोगों ने कभी इस तरह की एक्टिविटी की है? बिकॉज अक्सर लोगों को बच्चों को शौक होता है कि ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करें. नहीं मिस, कभी नहीं की. क्या हुआ? Have you ever done this type of activity? कभी नहीं की. Never. मिस मैं तार को छूऊं लेकिन इस वायर से आपको कोई शॉक नहीं लगेगा, कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगेगा, so don't worry about it. You will not get electric current from these two wires. Okay, just you will just attach one wire from to positive terminal and another from negative terminal as I show you in picture. Look at the picture again. Look at the picture again. What will you do? Like look at the picture. आपके पास एक सेल होगा. ठीक है. मे बी पॉसिबल कि सेल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन मार्क ना हो. ओके, देयर इज नो नेसेसरी कि हर सेल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन मार्क हो. आप क्या करोगे? आप खुद से वायर लगा के चेक करोगे दैट देयर इज पॉजिटिव और नेगेटिव साइन. अगर एक तरफ नहीं हुआ इसका मतलब ये साइन अपोजिट है, लेकिन ये ग्लो कर जाएगा. ठीक है. तो व्हाट विल हैपन? यू विल टेक अ सेल, टू वायर. मेरे पास सेल नहीं, बैटरी है. ओके, अगर आपके पास बैटरी तो दैट इज वेरी गुड शामिर. यू कैन यूज बैटरी आल्सो. ओके शामिर, if you have battery so you can use battery also. Teacher, this is our activity. Beta, basically this is your project work and this is 5 marks. इसके 5 marks है जो आपके 0 टर्म के सिस्टम में इंक्लूड होंगे. So what will you do? आप लोग क्या करोगे? आप लोग एक्टिविटी परफॉर्म करोगे उससे, और आप जब ये छोटी सी वीडियो बनाओगे, आप लोग क्या करोगे? आप लोग छोटी सी, जब आपका ये एक्टिविटी हो जाएगी, जब ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, तो आप लोग एक स्मॉल वीडियो बनाइएगा बल्ब को वाइट को अटैच करके और बल्ब ग्लो करके. आप छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, मुझे वीडियो भेजेंगे. एंड दिस एक्टिविटी इज फॉर 5 मार्क्स. सॉरी, यस क्लास, डू यू हैव एनी क्वेश्चन?
Do you have any question, beta? If you want to ask any question, you can ask me. Class. If you have any confusion, you can ask me freely. I am here for you. Teacher, I don't have. So, all of you are able to do this activity. आप लोग activity कर लोगे? Yes, class. Yes. Okay, blast. This is your project work और इस project के 5 marks include हैं. This is for 5 marks. ये 5 marks का project है and this marks which will be included in your zero term assessment. Okay? Yes. असेसमेंट का मतलब क्या है? Zero term assessment, you will get 5 marks from this project. So what will you do? जब आप ये project पूरा कर लोगे, जब आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा तो you make a small video. आप एक small video बनाइएगा या पिक्चर लेके मुझे WhatsApp कीजिएगा मेरे नंबर पे, ठीक है? और जो जो बच्चा मुझे WhatsApp करते जाएगा, I will note down their names and marks, okay? And I will include this mark in your zero term assessment report card. वैसे आपकी आवाज बहुत अच्छी है। Sorry? Teacher, I am not able to do this. I am not able to do this. Okay. Who's speaking? Just let me मुझे know. टाइम होने वाले। I know. Time is up. No, beta, we have 10 minutes right now. Yes. Who is मिस unable 1 to? मिनट Who is unable to do 6:30 को this? होगा। Who is unable to मैं do कर this? लूँगा। Who is unable to do this? Teacher, I am not able to do this. Wafa. I am. Okay, beta, just let me know. मैं इतनी सारी डेंजरस चीजें देखी आप एक बार करूँगा। Because this is not a dangerous thing. This is not a dangerous thing. Just let me listen. Don't worry about it. Just let me know if you are able to do this. Just send me a message on my WhatsApp number. If you are not able to do this, so don't worry about it. Okay? मैं कर लूँगा. Okay. Now listen everyone. Open your worksheet pack. Open your worksheet pack ओके everyone. मिस टाइम हो गया 6:30 हो रहा। Beta अभी 10 minutes है. We have 40 minutes class ना. Everyone open your worksheet pack. Okay. Now look at this worksheet. All of you have done this worksheet? Yes. All of you have done this worksheet. Just let me know. All of you have done? Yes. All of you have done this worksheet? Yes. Show me the picture. Show me the picture. Show me the picture. Hurry up. Yes. Show me the picture, everyone. टीचर कौन सी वाली? This one. This one. Which I have given last week. This one. All of you have done this activity because I have explained this activity this worksheet last week. Na? All of you have done this. No, miss. No. Beta, this is your last week homework. Teacher, I will do. पागल मैंने अब तक. No, miss. मत कर. Teacher, no. Teacher, I will do it today. Teacher, हमारी light चली गई. Those students who didn't बेटा लाइट का वर्कशीट के सॉल्व करने से क्या ताल्लुक है? आपने अपनी वर्कशीट पैक के अंदर सॉल्व करनी है. And I have explained each and everything about this worksheet pack. So why you didn't do this? ये वाली कर ली मैंने। पता ही नहीं था. Teacher, I will do this today. Everyone submit this worksheet pack tomorrow. You have only a last day. I will giving only 1 day more time. Okay. Now come to this worksheet. Page number 16. Okay. Page number 16. Page number 16. Page number 16. तो
आराम से। So what will you पेज do? नंबर 16। Page number 16. Look at the picture. ये है ना? Yes. No, this one, not this one. Page number 16. Here are the picture na beta. Look at the screen. Look at the screen. 16 ही खुला हुआ है। पेज नंबर 16। Look at the screen na beta. Look at the screen. Okay. Here is a list of tests. You will here is the list of ये मत materials. करो यार। Okay, now listen everyone. What will you do? Here is a list of materials you will test. To test these materials, hold both wires from your circuit to different areas of the material. Do not touch the wires together. If the material is a conductor, अगर आपके पास कोई एक मटेरियल कंडक्टर होगा तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, और अगर मटेरियल कंडक्टर नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ठीक है, आप क्या करेंगे? राइट डाउन ईच मटेरियल इन द गिवन बॉक्सेस. Here are the some materials: eraser, paper clip, plastic button, glass marble, wood, पेपर, नेल, पेंसिल का वुडन पार्ट और पेंसिल का मेटल पार्ट. ठीक है, व्हाट विल यू डू? इन दिस बॉक्सेस यू विल राइट दैट विच मटेरियल इज अ कंडक्टर एंड विच मटेरियल इज एन इंसुलेटर. ठीक है, तो पेपर क्लिप इज एन कंडक्टर इंसुलेटर. यस समीर, यस समीर. पेपर क्लिप, पेपर क्लिप यस, इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर. इंसुलेटर। How can you say that paper clip is made up of? पेपर क्लिप किससे बनता है? पेपर क्लिप प्लास्टिक का होता है. जब वुडन का होता है। पेपर क्लिप वुडन का होता है. Who will tell? Yes, Plastic. Aurelia. Aurelia. Yes, Aurelia. Yes. मैंने सबको अनम्यूट कर दिया. Yes, Aurelia. Paper clip are insulator and conductor. कंडक्टर। Conductor. Because paper clip are made up of metal. That's why they are conductor. Okay. Write a conductor in this box. Now Wafa, just let me know. Plastic button is an insulator or a conductor? Plastic button. इंसुलेटर। Insulator. Very good. मिस Now, glass marble. Yes, Fahad. Glass marble is an insulator or a conductor? इंसुलेटर। कंडक्टर इंसुलेटर। Insulator. Very good. Now, wood. Ahmed. Sir, I cannot hear your voice. Beta, join me again. Join me again, everyone. Join me again.